So hello students, in this video we'll talk about very important topic in number systems, prime numbers. Okay, so we'll see some facts and the concept behind prime numbers. It is very popular in competitive exams, in school exams, and definitely in college exams. Okay, so we'll go ahead with prime numbers. Okay, so we already know that whenever a number is only divisible by 1 and itself is basically known as a prime number. So a number is only divisible by 1 and itself is known as a prime number. So here only is the keyword. Okay, only is the keyword. Okay, so it will be having only two factors, like the number itself and 1. Okay, so we'll just head to the representation of prime numbers. So representation of prime numbers is basically done by 6k plus 1. Okay, so this is the basic representation of any prime number. We can just check it out, like if you're putting k is equal to 1, we will get the value as 7. K is equal to 2, we'll get the value as 13. K is equal to 3, we'll get the value as 9. As we can see that all the numbers are prime numbers. Okay, so I'll tell you some important facts to note, that there are 15 prime numbers between 1 to 50. Okay, 1 to 50 there are 15 prime numbers, and there are 25 prime numbers between 1 to 100. Okay, so this is a fact that you should be knowing. 25 prime numbers between 1 to 100 and 15 prime numbers from 1 to 50. Okay, and the largest 3-digit prime number is 997. Okay, I think this is not clearly visible. I'm sorry, I'll write it here. The number is 997. This is the largest 3-digit prime number. Alright, so we'll head to another concept of prime numbers. Just give me a second. Okay, cool. So so the important fact is, like P, if P is the prime number, if P is a prime number, then p square minus 1 must be divisible by 24. And this fact is very useful in the questions. I'm telling you this, like if P is any prime number, then p square minus 1 is basically divisible by 24. Okay, so and coming to the next part, now the next important part is like how to find whether the number is prime or not. Okay, if we talk about small numbers, अगर हम छोटी नंबरों की बात करें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब तो हमें याद है, लेकिन काफ़ी छोटे नंबर्स हैं तो हम इनको बहुत इजीली देख सकते हैं कि प्राइम नंबर है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि नंबर बहुत बड़ा है, सपोज दैट मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है 573, मान लो कोई एक नंबर है ऐसा कि जो ये नंबर ख्याल ये तो 3 से डिविजिबल है, तो ये इजी है. लाइक मान लो कि 577, मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाता है, तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है. तो इसके लिए एक चीज़ है, एक ट्रिक है जिसको मैं बोल सकता हूँ. इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक कोई भी नंबर है, सपोज दैट अभी थोड़े छोटे नंबर से अगर मैं शुरू करूँ, तो मान लो 143 नंबर है. ठीक है, सो 143 नंबर है, तो हमें क्या करना है, 143 का हमें रूट ले लेना है. 143 का हम रूट ले लेते हैं, तो हमको पता है कि ये नंबर 143 लाई करेगा 11 से लेकर के 12 के बीच में, है ना. तो हम 12 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं 12 के पहले, लाइक 11 आ गया, 7 आ गया, फिर तुम्हारा 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, है ना. इन सबसे इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे. अगर ये जो नंबर है इन सारे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो दिस नंबर इज डेफिनेटली अ प्राइम नंबर. ठीक है, एंड दिस ट्रिक कैन बी वेरी यूजफुल इन योर एग्जाम्स. ओके, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वेयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
अगर इसका और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लो 731 कोई नंबर है, ठीक है, 731 है, तो 731 इज समवेयर लेस देन अराउंड 27, इसका जो रूट होगा वो 27 के अराउंड लाई करता है। तो 27 के पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं हमको चेक करना पड़ेगा इस ये नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं। अगर उससे डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर उन सबसे वो डिविजिबल नहीं है, इसके रूट के पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे ये डिविजिबल नहीं है, तो ये 100% एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, ऑलराइट। So another part is basically now we are talking about powers. Okay, suppose the number is written like 3 to the power 193 plus 5, ठीक है। मान लो ये कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ, लाइक टेल मी, क्वेश्चन इज टेल मी लाइक वेदर this number is a prime number or a composite number. Okay, the question is this. So what we gonna do, we can just simply say that any number, any odd number having power of odd number, okay, is basically odd. All right, odd power having odd power a number is basically odd. We can see 3 is an odd number, this number also is an odd number, will give the value as odd number, but and adding odd plus odd will give you a even number. So these are some properties that you can apply in basic maths. Like 3 to the power 193 will give you an odd number, and this is also odd number, so odd plus odd will give you an even number, hence it is divisible by 2, so it is not a prime number, not a prime number. All right, okay, cool. Now if we talk about another question, okay, so the question is written as 1 0 0 0 0 0 1. Suppose this number is written and they are asking that whether this number is a prime number or a composite number. Okay, so what we can do, we can just simply write it 10 to the power 6 plus 1. Okay, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, 10 to the power 6 plus 1. Okay, so 10 to the power 6 plus 1, tell me whether this number is a prime or composite. So what we can see that this number is written is basically the cube, okay, is in the, we can distribute this number in the form of, we can basically change this number into the form of a cube plus b cube. Okay, so 10 to the power 2 to the power 3 1 to the power 3. Okay, this can be written as this, hence we can see that a cube plus b cube, we have the formula like a cube plus b cube is a plus b, a square minus ab plus b square. We all know this formula, so we know that this particular number will be divisible by a plus b. Okay, so we can say that this number will be 101, and hence we don't need to calculate because we can sense that this number is divisible by 101, hence this number is also not a prime number. Okay, so okay, that's all for today. Thank you. I hope you liked this video.